Set out on the path to holistic learning and realize your UPSC goals. Benefit from consistent and tailored assistance, have your questions addressed promptly, and ensure your preparation remains on track with unwavering learner aid. To empower aspirants in reaching their UPSC goals, Vision IAS Delhi presents the GS Foundation course. The course highlights include holistic current affairs coverage, continuous mentoring and support system, comprehensive syllabus coverage, tech-enabled classroom and services. Enroll in the Vision IAS Delhi GS Foundation course. Batches starting 9th February, 1 p.m., 23rd February, 9 a.m., 28th February, 5 p.m. Start on the path to success in the UPSC Civil Services examination today. Dear students, as you embark on the UPSC journey, you encounter not only a vast syllabus and evolving patterns, but also the challenges of time management, retaining a massive amount of information, and dealing with the unpredictability of the prelims. Thus, success in prelims requires more than hard work, it demands a well-crafted, strategic approach tailored to overcome these specific hurdles. In this scenario, specialized mock tests become your strategic tool. It not only aids in holistic revision of the syllabus but also helps you develop problem-solving skills, navigating exam uncertainties, aids in overcoming exam stress and anxiety, and promotes effective time and resource management. These are your gateway to mastering the complexities of the UPSC prelims, providing the confidence and the competitive edge you need. Realizing this significance, and with a mission to help students achieve excellence in their effort, Vision IAS has launched its much-celebrated All India GS Prelims Test Series Mentoring Program 2025. Building on the significant role of mock tests in UPSC preparation, we present our carefully designed 35 mock tests. This includes 8 fundamental tests to strengthen your basic concepts, 17 applied tests to enhance your knowledge application, and 10 full-length tests to ensure you are completely exam-ready. Alongside these tests, benefit from our personalized mentorship. With our experienced mentors, get precise preparation inputs to refine your preparation strategy and maximize your potential. Join us for live online-offline classroom test discussions and in-depth post-test analysis for every test. These are crucial for understanding your performance and improving consistently. For each test, we provide answer keys and comprehensive explanations, ensuring you have a clear understanding of every concept and question. Make the most of your revision time with our quick revision module, QRM. Designed for efficiency and smart preparation, it will help you focus on key concepts and areas for improvement. Our test series schedule is thoughtfully designed and flexible, catering to your unique preparation needs and learning pace. Experience our innovative assessment system. Track your progress with our trademarked innovative assessment system that also provides you with an all-India rankings, giving you a realistic view of your standing among aspirants nationwide. Take the first step towards your UPSC success with the Vision IAS All India General Studies Prelims Test Series and Mentoring Program 2025. Registration open. Ready to begin? Register now at our website. For further any queries, reach out to us at or enquiry@visionias.in. We're here to assist you on your journey to success.
Good evening, everyone. How are you all? Good. So how is the preparation going? बताइए. Anxious? बहुत. So by now you would have got enough tips how to handle pressure. So how to deal with the stress. फिर वो टिप्स सुन के स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है. So I'll not give you any tips then. So I'll let you guys to ask whatever the doubts you have. So you can ask in the end. Okay, before that, so let me give you a rough idea how to prepare two sections. So one is geography, another one is science and technology. Okay, so in the next 3.5 months, so till prelims. So what are the basic things to be covered, should be covered? So जो किसी को भी miss नहीं करना है, and what is the approach to be followed? What are the do's and don'ts? जो do से ज़्यादा important है don'ts, है ना? जो usually हमें पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है, तो यार ये तो पता ही नहीं था, ये सब नहीं करना था. ठीक है. So let's start with the geography. The basic part of it, the most basic part of it, the syllabus. So I hope all of you have seen the syllabus, the topic as given in the prelims notification. The geography syllabus in the prelims is mentioned as Indian and the world geography. Okay, तो ये थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है. ये तो दिया है, दोनों पढ़ना ही है. You have to read both Indian and world geography. What are the aspects? The physical, social and economic. The physical geography, social geography and economic geography, both from India as well as the world. So ये तो one line में दे दिया, तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पता चलेगा? So by going through the previous papers and overall the pattern of the questioning, the depth of questioning, we will be able to zero down the topics to be covered and all. So this is the basic topics should be covered as part of the geography. So overall geography has 3 parts: the physical geography of the world, the physical geography of India, and then the human geography. Okay, so 3 basic parts, you have to cover all the 3. So in fact in the next slide I'll show you the overall weightage. तीनों equal weightage है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि skip कर सकते हैं. Okay, because many of the students will just cover the physical geography and they don't do this human part, and many of the questions in the current times they are coming from the human geography. Okay, human geography includes the economic aspect, okay, majorly economic aspect and very little of social aspect. The physical geography includes the traditional parts: geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, including some parts of the solar system, Earth, universe, all of this. And most important part of this physical geography in the prelims part particularly, so that is mapping. Okay, so but it is, it is difficult to separate this mapping from these parts, so I'll tell you how to approach the mapping. So in the physical geography of India, we have to study the physical features, the drainage pattern, the climate, soil, and of course this mapping part of all this. Okay, so all of this should be covered through mapping also. So talking about the human geography, most important part is natural resources, different types of natural resources. That includes the water resource, the natural vegetation, the minerals, including the energy resources. Okay, so all of this comes under natural resources. So natural vegetation I have given it separately because it is part of the natural resource only, but usually 1 or 2 questions will be there which is specific to natural vegetation. Then agriculture is the primary economic activity, industry and transportation the secondary and tertiary economic activity. Okay, so from the prelims point of view you have to cover particularly agriculture, usually the related to current affairs and the data part, and industries again related to both current aspect as well as the traditional aspects, the raw materials which are used in different industries,
and the type of linkage which it has, the forward and backward linkage. Okay, all of this it has to be covered, and the important transportation, this is totally related to current affairs. And population and social aspect, there have been very less questions, I'll tell you. तो इसमें तो topics ये होता है कि what is population, distribution of population, factors affecting population, okay, settlements, tribes, these are the traditional part, but इसमें तो बहुत कम question आए हैं. ठीक है? So this is the overview of the geography syllabus which has to be covered. Okay, so and ऐसा नहीं है कि कोई भी topic skip कर सकता है. Okay, so every topic has to be covered. At least they should have some idea about it. ठीक है. So this is the weightage of geography in the last 7 years, and so I'm happy to see good number of questions in the last 2 years. So you will also be happy if you have studied geography thoroughly. So, but you know, because geography is one subject, if you prepare well, so it will be rewarding. Okay, तो ऐसा नहीं कि बहुत unpredictable है, जितना भी prepare करो इससे solve नहीं होता है, ऐसे तो नहीं है. You prepare well, it will be rewarding. And सबसे ज़्यादा reward आपको मिलता है environment में, है ना? So you connect geography with environment, so it will be totally rewarding. So in the last 7 years, the first 5 years, you can see on an average there's around 10 questions, 20 marks out of 200 marks. And in the last 2 years, the number of questions have increased. 2022 there were 18 questions, and 2023 there were 21 questions overall. Okay, so and you can clearly see from the previous trends that once UPSC starts to ask in a particular pattern, so in terms of weightage at least, it gets repeated at least for 4 to 5 years. Because if you go back by 2014, so earlier there were again good weightage. Okay, तभी तो high था, तो around 16 to 18 था, तो फिर continuously for like 6-7 years the overall weightage came down around 10. Now again it has increased, so it is expected to increase this year also. So, but just by seeing the overall numbers, it is difficult to conclude. So, which areas are important? We have to analyze area-wise too. तो ये है area-wise breakage in the last 7 years. Okay, जो सबसे ज़्यादा useful होगा. But खाली numbers देख के तो समझ नहीं आएगा. So, in the last 7 years, there are a total of 91 questions, and you can see all the sections have questions except this climate of India. But climate of India, so overall idea is very restricted here, क्योंकि monsoon climate के ऊपर question आए हैं, तो दूसरा overall climatic conditions के ऊपर question आए हैं, which can definitely link to the climate of India. And कौन सा सबसे ज़्यादा important है? Mapping. Okay, so I'll show that part. So before that, you can see the overall weightage of 3 sections. I told you 3 parts. The one is, ठीक है. So there are 3 sections here. One is physical geography of world, physical geography of India, and the economic geography. This is economic geography. This is physical geography of India, physical geography of world. And all 3 almost carry same weightage. So 35, 45, 35 ऐसे. So overall, you can see almost 1/3. So that means you have to give importance to all the 3 sections. You cannot skip. And within each section, what is the weightage? This is physical geography of world. So in the physical geography of world, the mapping covers the highest. Okay, a total of 55% comes under mapping only. Okay, in the last 7 years. So then the unit of, the Earth, solar system, and the universe, and then geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, and सबसे ज़्यादा आपको मिलता है climatology and oceanography. Okay. So then comes geomorphology, and then the Earth, solar system, and universe, and then biogeography. There's only one question. So nearly 50% of the questions from the world physical geography is directly from mapping only. फिर खाली mapping कर लेते हैं. So it will be too difficult to remember. Okay, the mapping part gets easier with the understanding of these concepts. तो ऐसा नहीं कि randomly उठा के mapping पूछते हैं. So usually it is related to the geographical features. Okay, so mountains, plateaus, volcanoes, rivers. Okay, all of this are actually covered. While studying this, if you cover this, it will be easier.
and of course there's current aspect also to it. Okay, तो मतलब मैपिंग तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो ये भी पढ़ना है. Okay, ये भी पढ़ना है. Now the physical geography of India. So here a total of 80% I have given in mapping. Out of physical geography 80% is mapping only. फिर यहाँ पर भी वही करते हैं, खाली मैपिंग कर लेते हैं. एक्चुअली मैपिंग में ही थ्रू कवर होगा, थोरो कवर होगा. तो वेर यू विल स्टडी अबाउट द ओवरऑल फिजियोग्राफी, द स्टेट्स एंड देयर बॉर्डर्स, द रिवर्स, particularly the rivers along with their interlinking of other themes. So for example, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, when you how you interlink this with the mapping, okay, that is going to be very important. इसलिए ऐसा नहीं कि उठा के हम अटलस से मैपिंग करना शुरू कर लेते हैं, सारा कवर हो जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है. ठीक है. So even though mapping is 80%, it has to be studied with respect to physiography, with respect to drainage system, with respect to soil, with respect to natural vegetation, as well as environment. ठीक है. And talking about economic geography, so economic geography, all the topics have almost equal weightage. So natural resources cover the almost largest. Okay, so I told you here the water resources, mineral resources, energy resources, as well as natural vegetation. And agriculture, again, you know, so nearly 28% of the entire economic geography. तो यहाँ पर आपको cover करना है the parts from, you know, economic survey. पर इस साल के लिए तो आप lucky हो गए थोड़ा सा. So I was saying agriculture is one aspect where you have to link it with the current affairs. So particularly about the crop distribution, which crop is more, which crop is less in terms of area in the last 1 or 2 years, which one has increased, which one has decreased, the production, import, export, all of these are the questions which have been already asked. So since you don't have economic survey, so you are a bit lucky, but doesn't mean that you should not be studying economic survey. Try to refer the data from the previous economic survey, as well as the document जो temporary survey आने वाले, तो उससे भी एक बार देख लेना agriculture related. It's very important. तो वहाँ पर आपको क्या देखना है? What exactly how to see? The data which is not limited to the before last year only. Okay, they would have given some trend in the last 5 years, last 10 years. Okay, so in the last 5 years, last 10 years, how the area of rice has increased, area of sugarcane, whether it is increased or decreased, वो trend आपको देखना है, वो change नहीं होगा, वहाँ से question आएगा. Okay, so the trend of last 5 years and 10 years, wherever it has been given, so please follow that. That will be useful. And industries, as I told you, so give focus for mainly the raw materials used in particular industry, and in which industry it is linked, the forward linkage, backward linkage, and if there is any current related industries which are in news, for which the government may have announced some important schemes. The scheme may not come, but about the industry they may ask. Okay, what are the industries which are in news? You have to cover it. Transportation is totally from current affairs. Okay, so the traditional questions like what are the advantages of roadways, what are the advantages of railways, ऐसे तो नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है. So they will ask the corridors. जैसे last year का क्वेश्चन आया था BMIC corridor, है ना, तो ऐसे वाला corridors के ऊपर क्वेश्चन आएगा. Between India and other countries, neighboring countries, within India, the highway corridors, railway corridors, are the new airports. Okay, all of this. So that is under transportation. So otherwise, social aspects, there have been very minimal question. एक ही question आया है, that was the question on PVTG, which you can say is the question of art and culture also. तो फिर इससे हट जाएगा. Okay, so other than that, so don't worry too much about this population, settlements, don't worry too much about that, you don't have to read. ठीक है? So this is mainly regarding the weightage. So that is about the syllabus, the weightage, and the different sections to be covered. You have anything specific to ask here? How to cover, what to cover? Chalo, let me put some analysis in terms of the type of questions which are usually asked here. So in geography, we have traditional geography, the conceptual part, we have 2 types of question. One is the conceptual static part. The second one is current related.
Okay, so first let me show the example, then we'll come back here and we'll identify which are the areas of current, which are the areas of static part. Okay, this is an example of static and conventional questions. Traditional geography, you have studied geography, you will be able to answer this. So बताइए, what is the answer here? You have understood the basic concept of geography, you will get it. What is the answer? Okay, good. So dew drops are not formed on a cloudy night because the clouds reflect back the radiation. So you have to understand the concept of dew formation. Dew formation requires three important conditions: long winter night, windless condition, okay, that is calm condition, and clear and cloudless sky. If there are clouds, it will reflect the radiation released by the land, and that reflect is trapped near to the surface, and the surface will not cool down. And a concept hai, you understand the concept, you will get the answer. Okay, that is conceptual, static part of geography. Another example, 2021 question. Read the question, at least get the theme, how exactly they are asking. ठीक है, leave out the answer छोड़ो. So the question is about the high seas and the oceanic resources found in the high seas. This is related to current affairs. Okay, so from the current affairs, a theme has been picked up and then a question has been taken from geography. You study about the minerals, you study about the economic resources, you would have studied about this. But इतना detail में जाके तब पढ़ना होगा जब anything related to current affairs you find it here. Okay, current affairs में कोई theme आ गया तब इसको detail में जाके पढ़ोगे. ठीक है? So here the answer is 2 and 3 only. So it's not important about the answer. Understand the theme. So there are two types of question. Here you don't find anything related to current affairs. Here it is inspired from current affairs. Both are geography questions. Both are part of geography itself. Dono you would have studied from the notes or textbook, wherever it is. Okay, so one is from current affairs, where a theme has been picked up from the current affairs and then the question has been asked. Okay. So these are the questions related to locations. There are two types of location. One is static location, another one is current affairs based. Okay, so read this question. Okay. See, you're not going to see this in news. You may or may not have seen this in news, but you have studied geography thoroughly, you would know this. You have studied about the Great Himalaya, you would know that this is extending from Namcha Parvat to Nanga Parvat. The eastern and westernmost extremes of Great Himalayas, right? And the overall important peaks of Great Himalaya, Middle Himalaya, okay, important regions inside that. So all of this you have studied thoroughly, you will know about this. This is not related to current affairs. This is related to current affairs. This last year ka question hai. Okay, so area in conflict or news or something, and then country. ठीक है, कौन सी country में कौन सा area है? So there it's not about the news, it's about the location. So like this you will find n number of locations in the atlas. Why only this has been asked? This was in news in the last year. Okay, two types of locations. Okay, we'll come back here. So now talking about this part, the static and the current related parts. So if we come back to this areas which we have identified. Geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, totally conceptual part. You have to be thoroughly strong here. Okay, basic concepts, you should not miss any of these. Okay, so the questions have come inspired from current affairs, but whether it is going to be there in news or not, this will be asked for sure. This is the foundation of entire geography. Ye clear hona chahiye. This is totally related to current affairs.
There are one or two basic concepts. For example, season, latitude, longitude. There you can expect some static question, but otherwise you will see something related to current affairs, and this is linked to your science and technology also, the space part. In Indian geography, climate is the only part where you will see some concept. Okay, so here you can talk about the concept of monsoon, arrival of monsoon and distribution of the rainfall. Otherwise, everything is related to either information or current affairs. Information based question भी आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको information based questions मिलेगा. Okay, but they're all static questions. For example, in climatology, they may ask about the albedo, the reflectivity, or the heat budget. They're all information based. Which one has higher albedo, which one has lower albedo? Information based. But traditional part, static part. Okay, so here in physiography and drainage system, again the static part. मतलब यहाँ पर कोई करंट अफेयर से इंस्पायर्ड आएगा नहीं आएगा, आपको पढ़ना है, थरोली कवर करना है. यू हैव टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड देयर इंटरलिंकिंग. Rivers, most importantly, you have to cover with respect to other themes, most importantly environment. Okay, so abhi jo cross linkage ho raha hai between the geography and environment, it is near to the rivers, drainage system. Okay, for example, 2 years before there was a question, okay, Kaveri river basin mein kaun kaun sa national parks hai. Okay, so you have to link it over there. Soils of India, again traditional part. So now natural resources, vegetation, agriculture, industry, transportation. So this is either information based, okay, directly or current affairs based. यहाँ पर कोई ज़्यादा concept नहीं लगता है. You go to any of these topics, you have to be updated in terms of current affairs, totally current affairs related, or go with the information. Okay, for example, cropping regions. Okay, cropping regions of India, what are the cropping conditions, right? Or the raw materials used in major important industries, all of this. So let's go to the mapping part. How to approach the mapping part? Okay, so we have seen the major part is in the mapping. These are the themes which have been asked in the last few years in the mapping part. Okay, so which you should not be missing. So first important one is political borders. Political borders में question कैसे आता है? For example, what are the countries surrounding Mediterranean Sea? What are the countries surrounding Red Sea, Arabian Sea? ठीक है, both national as well as international state borders भी पूछते हैं in a different way, in a most practical manner. If you are traveling from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states through which you have to pass? तो previous question है ना? So for that you should know the internal borders. Borders हो गया. Regions in news totally related to current affairs. Okay, so I have just shown the example. Regions in news. And then international grouping is our IR. Okay, so this is the topic of IR, which you can link it with the mapping. Okay, if you take some world map and mark few international groups, easily you can remember them. Who are the members of G20? कैसे याद रखेंगे? तो मैप के ऊपर मार्क करो, याद हो जाएगा. SAARC countries, ASEAN countries, okay, so G8, G7, so जो भी groupings है तो उसके ऊपर मार्क करो तो आसान से याद हो जाएगा. So this is totally from your traditional parts. Okay, this is the static part. Mountains, peaks and volcanoes. Volcanoes, हाँ, recent volcanoes current affairs में आ जाएगा. And glaciers of India only. India का ही glaciers देखना है तो पूरा दुनिया का नहीं देखना है. Important glaciers of India and their locations in which mountain, which peak. Rivers and water bodies, both national as well as international, you have to cover. दोनों cover करना ही है. Rivers of India should be done in a detailed manner. International river, you don't have to go in detail. You don't have to remember each and every country through which a river flows. However, you have to remember the origin and end. For example, Nile River originates from Lake Victoria, ends in Mediterranean Sea. Important rivers and their origin and end. ठीक है? So that is rivers. Reservoirs only for India, of course. Most importantly, ये current related ही होगा. पुराना reservoir सारा सबको पता है. बागरा नंगल से हिराकुड. So don't worry about that. उसके ऊपर ज़्यादा question नहीं आता है. However, current related reservoirs which are in news, national parks and wildlife sanctuaries, including the wildlife, you can connect the wildlife also here. Okay, for example, swamp deer कौन से region में मिलता है? ये कैसे याद रखेंगे हम? मैप के थ्रू करो.
Okay, cover the important biogeographical regions across India, and within each of the region mark the important wildlife, क्योंकि the wildlife always depends upon the biogeographical region, the habitat and climatic conditions. There are a total of 10 biogeographical regions. You will find the commonality of wildlife in that region. Okay, for example, snow leopard. Snow leopard कहाँ पर मिलता है? अभी तो सर्वे भी हुआ है. हिमालयास. कौन कौन से स्टेट में मिलता है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल. What is common about these? The Himalayas, biogeographic region. Okay, where do you find Great Indian Bustard? Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, yes, Madhya Pradesh, parts of Madhya Pradesh, and then Karnataka. What is common about this? Dry climate, grassland. Okay, Maharashtra, Karnataka, the rain shadow area. Okay, so Madhya Pradesh and Gujarat and Rajasthan, the entire dry area, even parts of Haryana also. Okay, so go with the biogeographic region, it is very easy. तो mapping के through करना easy हो जाता है आपको. ठीक है? So करना कौन कौन सा एरिया ये तो ठीक है, कैसे करना है? How to cover this mapping? Okay, simple, 3 steps. You have to do it in Atlas only. Atlas में ही करना है, तो wall map के ऊपर आप लगाना शुरू कर दिया तो पूरा भर जाता है. Okay, cover it through Atlas and keep a separate note. Atlas and separate note. Divide the notes into 3 parts. The first part is traditional mapping. Traditional mapping मतलब न्यूज़ में है, कुछ नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट एरिया दुनिया में आपको पता होना ही चाहिए वो. For example, where is Mediterranean Sea? Where is Caribbean Sea? Surrounding Mediterranean Sea, what are the important countries? Okay, the traditional mapping part which you have to know. Okay, so what do you mean by Baltic countries? Okay, so what is the difference between UK, Great Britain, Britain? Difference बताएं? सारा करना है, mapping के through कर जाएगा, हो जाएगा. Okay, so what is Central America? What is Latin America? Okay, it is part of which continent? All of this traditional mapping, you have studied geography, you should know about this. First part, okay, that is traditional mapping, तो Atlas के through roughly cover कर सकते हो. Second part, once you have done the basic study of this geography, once you start your revision, okay, start making note of these examples which you have studied in the notes as well as your textbooks. Okay, textbook में notes में examples पढ़े होंगे. For example, while studying about the fold mountains, you would have studied about the different examples of fold mountains. Rockies, Andes, Alps, Atlas. Okay, start making note of this. वहाँ पर आपको thematic wise मिल जाएगा. Okay, वहाँ पर note करते जाना. The second part. Okay, all the important mountains, important deserts. While talking about the climate, desert climate, you would have studied about the important deserts across the world. Temperate grassland, you would have studied about different temperate grasslands. So keep noting this. Revision करते समय बहुत easy है. Okay, revision करते समय बगल में atlas रखो और जो हमारा mapping का notes है उसको रखो और लिखते जाओ. Mark करो, लिखो, mark करो, लिखो. Third one is current affairs. Okay, so अभी तो current affairs जो भी पढ़ा है दोबारा revise तो करोगे. अभी तक नहीं किया तो ठीक है. Okay, जो भी summary पढ़ोगे या जो भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा locations मिलेगा. उसको भी यहाँ पर ऐड करते जाना. Particularly आपको वहाँ पर मिलता है in 2 sections. One is in IR, second one is environment. Geography current affairs section कहीं पे भी नहीं होते हैं, usually बेचारा neglected है. Environment section में मिलेगा. Okay, these 2 locations are important. Keep marking it in the atlas and note down. And note down में बस basic information ही लिखना है. You don't have to go and do a thorough research over there. Where is it located? Why it is in use? 2 ही point है. So you cover this mapping in these 3 steps. Your mapping is almost done. But 100% coverage तो किसी का भी नहीं होता है. Okay, don't worry about that. Okay, so एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा तो सुना है नहीं, तो वो सबका ऐसे होता है. It's not special about you. And mapping you have to start doing it right now. Okay, don't think you will do last 15 days, 3.5 months है. 3 महीने में ये बाकी सारा पढ़ूंगा, last 15 days में mapping करूंगा. बिल्कुल नहीं, याद नहीं रहेगा. You will not be able to remember that. Okay, you have to start doing it right now.
एटलस, जो भी एटलस है उसको कवर करो. हाँ, so the important part is how to know which location is important, which location is not important. Okay, for this we have done a detailed analysis of the last 7 years. Okay, so in this PPT I have given these two links. Okay, so in that I have analyzed each of the section wise I have given. Okay, so from mapping separate questions analysis किया है, तो उसका PPT भी उसी में है, आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो उससे पहले गो थ्रू कर लेना बिफोर यू स्टार्ट योर मैपिंग, एटलीस्ट लास्ट 7 years ऑफ क्वेश्चन. लास्ट 7 years का मैपिंग कर लिया तो यू विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई विच लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, विच लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. उसके साथ में बाकी सेक्शंस का भी मैंने डिटेल एनालिसिस दे दिया. सो कौन कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए हैं, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो करना ही है, आपको स्किप नहीं करना है. बिकॉज यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या मिलता है? द क्वेश्चंस विल नॉट रिपीट, but you will get the important themes, important topics which you have to do. And most importantly, क्वेश्चन के ऑप्शन में जो होता है ना, उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन बन सकता है. ये सबसे ज्यादा काम आएगा हमारा मैपिंग में. ओके, कंट्रीज, द सीज, ओशंस, ओके, विच हैव कम, उनके ऊपर ऑप्शन में जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी उसके वो इंपॉर्टेंट है इसलिए ऑप्शन में दिया है ना, उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन बन सकता है. थोरोली गो थ्रू द लास्ट 7 years ऑफ क्वेश्चन. It's a very important part. ठीक है. And overall geography questions, concepts and static questions, I would say they are going to be easy only if you have studied geography thoroughly. अगर नहीं किया तो एटलीस्ट जो बेसिक पार्ट है उसको thoroughly कवर कर लेना. And current affairs are going to be medium. Why? Because you will either know it or you don't know it. Okay, एक बार थोड़ा बहुत आइडिया है तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट टाइप्स. एंड डिफिकल्ट वाला होगा इन्फॉर्मेशन बेस्ड. ओके, इन्फॉर्मेशन बेस्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एज वेल एज स्टैटिक, करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो वो डिफिकल्ट तो एक दो आएगा ही, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, दिस अबाउट जियोग्राफी. सो लेट मी ब्रीफली गिव यू इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हाँ, सोर्सेस में क्या करना है? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर जियोग्राफी? Whatever the source which you have studied till now, that is the best source for geography. Last 3 months में, 3.1 months में particularly, you will not find any other best source than the source which you have studied. Because it's not about the best source. It's about the source which you have studied in a best manner. Okay, जो भी source आपको आपके पास में है, जो भी अभी तक पढ़ा है, उसी को thoroughly revise करो. एनसीईआरटीज ठीक से डिटेल में कवर किया, उसको दोबारा पढ़ो. एनसीईआरटीज नहीं किया, कोई नोट्स पढ़ा है, कोई मटेरियल पढ़ा है, उसी को ही अच्छे से रिवाइज करो. सो डोंट थिंक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो उसके मैं पीछे रह जाऊंगा. अभी एनसीईआरटी के पीछे गया तो सच में पीछे रह जाओगे. ओके, सो जीसी लियोंग तो सब लोग पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ा, चलो बैठ के पढ़ लेता हूँ. डोंट डू दैट मिस्टेक. वॉट एवर यू हैव स्टडीड नाउ, depend thoroughly on that only. If there are any major parts are missing, मैंने दिखा दिया important areas, अगर वहाँ पर कोई भी important part missing है तो तब जाओ, जो कोई भी ऐसे छोटा मोटा सोर्स पकड़ो तो वहाँ पर thoroughly कवर कर लेना. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, ठीक से अगर आपका नोट्स में एग्रीकल्चर ठीक से कवर नहीं हुआ है, गो टू टोटल जियोग्राफी 10th स्टैंडर्ड. Okay, 10th standard ICSE syllabus total geography. In table form they have given the important crops, areas, conditions. Okay. So usually economic geography में इस source का issue आता है, so there you can refer to 10th standard ICSE total geography. Okay, it's called as total geography 10th standard. उसमें economic part में बस table form में दिया है, बस उसी को ही follow करना, तो thoroughly करने का जरूरी नहीं है. You don't have to cover it thoroughly. ठीक है? So don't worry too much about the sources right now. So let's talk about science and technology. So again coming back here. So what is given in science and technology in the syllabus? तो एक ही वर्ड दिया है, जनरल साइंस, बट देयर इज ए ह्यूज हिंट इन दिस. बहुत बड़ा सा हिंट है, जनरल. तो इसके अलावा करंट इवेंट्स. करंट इवेंट्स डेफिनेटली इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी. दिस इज साइंस, दिस इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फ्रॉम करंट अफेयर्स. ठीक है? So these are the important areas
from which the questions are usually asked. So number one is basic science. What is to be covered in basic science? Physics, chemistry, biology. देखो, those who are from arts background who have not studied physics, chemistry, biology till now, please don't start reading physics, chemistry, biology right now. Those who are from science background who have studied some physics, chemistry, biology, whatever you have studied, revise that only. बाकी लोग क्या करना है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से? So refer to the previous question paper. You will find some important themes. At least read those things. Okay, for example, in biology you would have read about like the plant cell, animal cell, basic difference क्या है? तो basics ही देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरी नहीं है. Physics, the 3 laws of motion, basic idea. Okay, basics देखो बस. कोई भी क्वेश्चन में जो लास्ट 7 years में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें बेसिक टर्म्स दिया होगा फोर्सेस के बारे में. ओके, तो या बायोलॉजी का जो ऑर्गन्स, ओके, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बेसिक आइडिया जो है उसको बस कवर कर लेना. यू डोंट हैव टू थोरोली कवर एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ एटलीस्ट. एंड दोज हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हु हैव स्टडीड लॉन्ग बैक, हु हैव नॉट स्टडीड नाउ, आपका भी सेम सिचुएशन ही है, बट आपका थोड़ा सा बेटर है कि आप एक बार देख लिया तो थोड़ा समझ आ जाएगा. ओके, वॉट एवर फ्रॉम वेरेवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम, आइदर फ्रॉम योर क्लास नोट्स और फ्रॉम एनी ऑफ द सिंपल सोर्स जो भी आपको मिलेगा, वहाँ से एक क्विक रिविजन लगा देना. 100% परफेक्शन के पीछे मत जाना, ठीक है? बाकी सारा जो भी है दे आर ऑल फ्रॉम करंट अफेयर्स. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, हियर द इंपॉर्टेंट एरियाज: बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, नैनोटेक, IPR एंड एनर्जी. इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता करें? So this is the overall number of questions which have been asked in science and technology. On an average, we can keep 12 questions. And 12 question is a very important area. इसलिए इस एरिया को 100% स्किप नहीं कर सकते हो आप लोग. ऐसे मत सोचो कि ये स्किप कर दूंगा बाकी सारा चीज़ें पढ़ लूँगा, वो नहीं हो पाएगा. दैट विल बी ए ब्लंडर. बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 100% इसके ऊपर फोकस करोगे, वो भी मुश्किल हो जाता है. You have not done anything till now, and in the next 3.5 months, leaving other subjects completely focusing on this is again total blunder. Idea है कि सारे एरिया का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार मतलब रफली गो थ्रू कर लेना. वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ उसी के ऊपर ही. बाकी सारा करंट अफेयर्स में डेफिनेटली साइंस एंड टेक का कोई सेक्शन होगा तो वहाँ से पढ़ लेना. ओके, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है. These are the overall areas. Okay, so based on the last 5 years, the highest number of questions which have come are in ICT, information and communication technology, biotechnology, and then health. Health related to hai. Okay, so then space technology and basic science. Okay, so ये सारा cover होगा या नहीं होगा, इनको तो cover करना ही है आपको. Okay, these sections which you have to cover. Okay, ICT, space technology, health, biotechnology and basic science. ठीक है, once you have covered that, so give some reading about this nanotechnology, material science, defense, nuclear, IPR and energy. Okay, let me show a few examples, then we'll come back to approach. So this was a question asked in 2020. Okay, just read the question, don't worry about finding the answer, you should get the idea. So ये दिखाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक से पढ़ते नहीं है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन देख के पढ़ते भी नहीं है, यार ये साइंस एंड टेक आएगा नहीं, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसे करते हैं. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट. द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बेसिक आइडिया ही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. ठीक है, दिस फ्रॉम द स्पेस. Regarding the merger of black holes. ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर,
Biotech. See, in the prelims, no question should be left unread. बिल्कुल वो गलती नहीं करना है. एंड यू शुड नॉट गो विद द प्री नोशन, ये सेक्शन नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इसका सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. यू आर एटलीस्ट 21 ईयर्स, 21 ईयर्स ही एलिजिबल है. 21 ईयर्स यू आर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, यू हैव हर्ड एंड सीन मेनी थिंग्स. कभी ना कभी तो कुछ तो सुना होगा, काम आएगा. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ा है, जो रट्टा मार के आए हो, पढ़ के आए हो, जो भी करके आए हो, वही पेपर में देखोगे. जब पेपर दोगे ये बहुत सारा क्लियरली समझ आएगा. प्रोबायोटिक्स कॉमनली सुनते हैं, प्रोबायोटिक्स. ठीक है. एक्सेलरोमीटर, जब आप मोबाइल खरीदने गया होगा उसका फीचर्स में देखा ही होगा ये एक्सेलरोमीटर. पता नहीं ये है या नहीं है, वो देखा होगा. वो क्या क्या काम करते हैं तो पता नहीं. इस फोन में नहीं है, उस फोन में है, चलो ये खरीद लो. हाँ, वो क्या काम है वो तो नहीं देखा होगा ना. ठीक है, यू आर गेटिंग द आइडिया. Now, based on these questions, let's see what is the approach to be followed in science and technology. The common thing which you have observed and noticed, one thing is all the questions, all the topics which have been asked are all practical. They are all based on practical application only. It is not something which you have to understand the science behind it. Okay, आपको उसका साइंस का वो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं ये इतना ज़रूरी नहीं है. उसका क्या implication है, what is the implication of this. Whenever you read a topic in science and technology, okay, just think about this. Practically इसका क्या यूज़ है. Okay, so any new technology, any new information जो भी आया है, तो अभी AI के बारे में बात हो रहे हैं. Okay, so crypto currency के बारे में बात हो रही है, क्रिप्टो के बारे में. इसका practical application क्या है. Most of the questions are related to the practical application only. Whenever you read, if you are not, even if you are not from science background, whenever you read a topic, at least you can relate. हाँ, ये basic idea है, ये यहाँ पर use होगा, इतना तो पढ़ लो. Those who are from science background, you can go a little bit detail, but no need to go too much behind the theory. That is my point. Okay, so you don't have to skip this part. Practicality. Second, those technologies in which India is working. जो इंडिया का जो अच्छे से चल रहे हैं, हमारा स्पेस का जो प्रोग्राम हो गया, डिफेंस का प्रोग्राम हो गया, where we have done well, we have achieved something new. We have been one of the very few countries in the world to achieve this. Definitely, you have to go and read those topics. Again, no need to go in too detail. चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बट चंद्रयान के अंदर जो कौन सा रॉकेट है, रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है, ये इतना डिटेल में नहीं आएगा. व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चंद्रयान. ओके, सो उसमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स, मेजर पार्ट्स कौन सा है, रोवर यूज किया है नहीं किया, लैंड किया है नहीं किया, बेसिक आइडिया. ओके, यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक आइडिया. ओके, सो इंडिया का जो भी अचीवमेंट्स है. एंड थर्ड, द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज. Okay, whether India has done it or not, at the global level, there is a talk about this. Okay, the upcoming news. Okay, so that thing, third one. In any topic for that matter, always go with the practical application. And never skip a question just because you have not read it. Read and apply some common sense, and still if you don't get the answer, then you can move ahead. For your basic reference, I have given few important areas from where you can cover this. This is not must. I'm not saying you have to go through all of this. Whatever the material you are going to cover in that science and technology, cover the basic idea. Don't skip this part. So now, combining both geography as well as science and technology. Few things which you have to do. Okay, so one of the important thing is practicing MCQs. Okay, this may be in general to all the subjects also. Whoever is giving this time, आपको प्रैक्टिस करना है 3 तरीके से. एक तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, वो जो उसका यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया,
whenever you read go through a previous question, see the theme, overall theme क्या है, उसका options क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो, वो प्रैक्टिस के लिए यूज हो जाएगा. And you will understand the pattern, the way of questioning. Okay, for example, last year बहुत सारे लोग कंप्लेंट किए थे, तो ये तो आंसर ऐसे दे दिया, एलिमिनेशन मेथड ही नहीं था, एलिमिनेशन मेथड ही एलिमिनेट हो गया. Okay, ये सारा कंप्लेंट कर रहे थे, बट बिफोर लास्ट ईयर देयर वाज ए सटल हिंट दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. Okay, you go through the previous paper, you will understand these also. It's not only the areas, it's not only the options, also the way of questioning. Okay, for example, assertion reasoning questioning. Assertion reasoning question, तो many of the students were saying last year सबसे पहले पूछ लिए तो हमें पता ही नहीं था. 10 साल पुराना वाला क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, वहां पर था. ठीक है, था. So these kind of questions were earlier asked. So you go through the previous paper, you will find many of such hints. And also it will give you confidence. When you have read some subject and you are going through a previous paper and you're able to answer this, definitely a confidence booster. Second, on daily basis you have to cover. Okay, daily practice. What is the use of this daily practice? It will keep you in touch with the way you have to prepare. Okay, जब daily basis में, let's say today you have revised a part of geomorphology and you pick up some random questions on geomorphology and you try to solve it. So you will get to know which part you have skipped, which part you should have thoroughly read. वो एक आदत हो जाएगा, whether your preparation is going fine or not. Second, you will come into the habit of solving a question. The most important thing in prelims is your readiness to solve a question. Your readiness to solve a question is most important thing. वो ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में जाके मैं करूँगा. एग्जाम में जाके इतना सारा स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पर इतने सारे लोगों को देख के बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं. तो फिर बीच में ये लोग आते हैं, अटेंडेंस में साइन करो, तो यहाँ पर OMR भरो, ठीक से भरो, तो इसी प्रोसेस में ही खो जाते हैं. सो इन स्पाइट, मतलब इफ यू हैव नॉट डन प्रैक्टिस, इसके प्रोसेस में आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही उसमें आके ठीक से करोगे नहीं. इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसका बेसिक आइडिया पकड़ो, व्हाट एग्जैक्टली इट हैज़ बीन आस्क्ड, वेदर द राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट करेक्ट. ओके, तो वो क्वेश्चन देखते वो ऐसे हैबिट में आ जाओगे ना, तो वो ऐसे रैंडम नहीं लगेगा, ये नया नहीं लगेगा. Okay, you will feel more comfortable in solving the question. ऐसा लगेगा आपका अपने रूम में बैठ के सॉल्व कर रहे हो. Okay, so it's more about the basic comfort. And every question, you have to take it as a challenge, whether you will be able to find the answer for it or not. Okay, so इसका मतलब prelims में when you are attempting a prelims paper, it doesn't mean that whatever you have read उसको revise करके, मतलब उसको याद करके यहाँ पर immediately tick mark कर दोगे. वो बिल्कुल नहीं है. So बहुत लोगों का ये गलत आइडिया है कि ठीक है मैं रिवाइज करके आया था तो इमीडिएटली क्वेश्चन देखा, आंसर सॉल्व कर दिया. बिल्कुल नहीं. इफ यू हैव 100 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 25 to 30 क्वेश्चंस विच वेर यू फाइंड द आंसर डायरेक्टली. क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर मार्क कर लिया. 25 to 30 क्वेश्चंस. बाकी वहां पर बैठ के फाइट मारना पड़ता है. यू हैव टू सिट, थिंक एंड सॉल्व, रिकलेक्ट एंड सॉल्व. यूज योर कॉमन सेंस. Use your general understanding. That is why I said it's not like you have read from a source, उसी को ही recollect करके हम यहाँ पर solve करेंगे. बिल्कुल नहीं. Whatever you have studied, you have heard, you have read, listened from your elders, from your friends, सब कुछ काम पे आएगा पेपर में. उसका आदत चाहिए. जब क्वेश्चन देखोगे उसका कैसे आंसर निकालना है वो आदत में आना चाहिए. उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना है आपको. डेली बेसिस एटलीस्ट कीप ए टारगेट. 25 क्वेश्चन में डेली बेसिस में सॉल्व करूँगा. 25 तो कर ही सकते हो. 25 क्वेश्चन हाफ एन आवर. कीप इट टारगेट ऑफ हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आराम से कर सकते हो. ओके, कीप ए पर्टिकुलर टाइम एवरी डे. ठीक है, डिनर के बाद मैं आधा घंटे बैठूंगा, सॉल्व करूंगा. रैंडमली क्वेश्चन उठाने. ओके, ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ा था वही उठाऊंगा. मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको उठा के सॉल्व करना है. यू विल कम इन टू दैट रेडीनेस. दिमाग में ये हटाना है कि मैं बुक नहीं पढ़ा है, मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, सोच नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन योर एग्जामिनेशन यू विल फाइंड मेनी सच क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड द आंसर्स आल्सो फॉर दैट इफ यू आर रेडी टू सॉल्व इट. इफ यू हैव दैट द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग द आंसर, देयर योर डेली प्रैक्टिस विल कम टू योर हेल्प. एंड थर्ड वन इज योर फुल एंड टेस्ट.
जो मॉक टेस्ट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मॉक टेस्ट? ओपन टेस्ट, जो विजन का भी ओपन टेस्ट चलता है, अभ्यास टेस्ट भी चलता है, अटेंड करो। वेदर यू हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन हो गया है नहीं हो गया, अटेंड करो, जाके अटेंड करो। इससे क्या मिलता है जो यहाँ पर जो हम नहीं मिलने वाला है? फर्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे बैठ के 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, यू विल गेट टू नो दैट, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस इन द एग्जाम सेंटर, टेस्ट सेंटर, preferably in the same time. Okay, that is why even we keep अभ्यास at the same time. Usually अभ्यास का सुबह और शाम का होता है, CSAT का भी होता है ना, तो उसी टाइम में सॉल्व करो। In 2 hours, how to handle the stress, how to solve the questions, वो आपको आदत लगेगा। सबके सामने, सबके साथ में बैठ के कैसे सॉल्व करने, वो आदत होगा। You will be ready to take the UPSC examination. Time management, stress management, and how to approach the paper. Okay, बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करते हैं। क्या सिली मिस्टेक्स क्या है? सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर वहीं पे टिक कर दिया, एंड में बैठ के OMR में मार्क करना। सोचता लास्ट 10 मिनट्स में मैं सारा मार्क कर दूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है? वो है आपका टाइम वेस्ट। लास्ट 10 मिनट्स में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपका माइंड ट्यून हो जाता है। यू हैव टू मार्क इट इमीडिएटली। If you are sure about the answer, immediately mark in the OMR, because you will not get a time to revisit that question. Immediately you have to come to conclusion, हाँ ये सही है तो मार्क करो, डाउट है तो सर्कल करो क्वेश्चन पेपर में, आगे बढ़ो। दोबारा आओगे, जब दोबारा आओगे बस यही जो सर्कल किया है उसी को ही देखो, फिर आंसर मिला, फिर मार्क करो OMR, इमीडिएटली मार्क करना है। लाइक दिस मेनी थिंग्स यू विल फाइंड। ये एग्जाम एनवायरनमेंट में जब करोगे तब भी मिलेगा आपको। So there it will be very useful, and also you can compare your performance. Okay, so in open test you will get so many people who are attending, you will get your overall assessment, and don't get disappointed with the performance in your open test or test full end test. Okay, usually एक level UPSC से थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, you know. So not as a discouragement, just to push you little bit harder. ठीक है, you should not get discouraged, because your maximum performance will be there on the day of prelims. ये सब तो step by step आगे जा रहे हो, maximum performance तो तब भी होगा, ठीक है। even if you are little bit behind, don't worry, full end test का ये फायदा है, ठीक है। practicing is must. So few tips for solving question. So always solve the question within the time limit लगा के ही करना है। So you should not, हाँ मैंने बताया उसको चैलेंज लेके करो, उसका मतलब ये नहीं कि ईगो पे लेके करोगे, दोनों अलग है। तो चैलेंज इज लाइक ए हॉनेस्ट अटेम्प्ट, हाँ मेरा जान लगा कि इसको सॉल्व करूंगा, पर 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो उसको पीछे करो, आगे करो, लाइक आगे बढ़ो, ठीक है। कीप ए टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। ओवरऑल टाइम लिमिट कैसे होना चाहिए? यू हैव 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 1 hour 15 मिनट्स के अंदर पूरा 100 क्वेश्चंस का एक राउंड होना चाहिए। ओके, एक बार करके देखो, 1 hour 15 मिनट्स, दैट इज 75 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, पूरा एक राउंड लगाना चाहिए। इन दैट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू जस्ट सर्कल्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर, थिंकिंग मतलब ये बाद में दोबारा देखूंगा, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। यू हैव गॉट अराउंड 30 क्वेश्चंस एज राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 45 मिनट्स दोबारा उसको बैठ के गो थ्रू करोगे ईच एंड एवरीथिंग thoroughly, क्योंकि once you have read that question in the first round, when you come back to the second round, your mind would be already thinking about this. Okay, दोबारा पढ़ो तो मैक्सिमम 0 डाउन करके आंसर मार्क कर देना जो डाउटफुल है। ओके, सो टाइम लिमिट इज रिक्वायर्ड। एलिमिनेशन, ऐसे मत सोचो एलिमिनेशन एलिमिनेटेड हो गया, अभी भी 50% of the questions can be eliminated. Okay, so nearly 50% of the questions where the options were like 1 option is right, 2 option is right, वो वाला था, वहाँ पर ज़्यादा एलिमिनेशन के लिए नहीं होता है, तो बट बाकी क्वेश्चंस में है, जहाँ पर होगा वहाँ पर एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग इज समथिंग विच यू हैव टू डू इट राइट नाउ, अभी से करना वो प्रैक्टिस। ओके, सो बिकॉज यू नो, सो व्हेन यू डू दिस मॉक टेस्ट, व्हेन यू टेक ए गेस, व्हेन यू टेक ए इंटेलिजेंट गेस ऑन सम ऑफ द क्वेश्चंस, सो जब आंसर देखोगे, टेस्ट के बाद में आंसर देखते हो ना, सबसे पहले यही देखो जहाँ पर आपने गेस मारा था, एंड सी वेदर योर गेस वाज राइट और रॉन्ग। इफ योर गेस इज राइट, थिंक व्हाई इट वाज राइट, आपको सोचने का कौन सा तरीका सही था।
इफ इट इज रॉन्ग व्हाई इट इज रॉन्ग, कैसे ऐसे सोच लिया था, कैसे सोचना चाहिए था. सो लाइक दिस इफ यू स्टार्ट टू सी एवरी क्वेश्चन. ओके, सो कोई भी पेपर आप सॉल्व करते हो ना, तो अगर 2 घंटे बैठ के सॉल्व किया है, 3 घंटे बैठ के उसको एनालाइज करना है. एंड ऐसे नहीं कि 100 क्वेश्चन 100 एनालाइज करोगे, जहां पर गेस लिया है वहां पर एनालाइज करोगे. सो दैट विल मेक योर गेसिंग मेथड, गेसिंग जो ओवरऑल मेथड है ना, उसको फाइन ट्यून करते जाएगा. दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंट गेसिंग. नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेंडेड, इसके लिए कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होते. मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना अटेंड करना है. ओके, उसका मतलब ये नहीं है कि तो कम करके आओगे. एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो. ओके, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी पता नहीं. डोंट वरी एट ऑल, सबका यही सिचुएशन है. एटलीस्ट 90 तक कोशिश करो. उसके आगे कुछ भी पता नहीं, रैंडमली मार करके बिल्कुल नहीं आने. ओके, रैंडमली बिल्कुल मार करके नहीं आने. ये मत सोचो कि 4 में 1 तो सही होना चाहिए फिर नेट बराबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं. यूपीएससी में वो हमेशा उल्टा जाता है. ठीक है. सो डोंट गो फॉर रैंडम गेस. डोंट गो फॉर गेस इन 3 ऑप्शंस ऑल्सो. यू शुड टेक ए गेस ओनली व्हेन यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. आपका काम ये 2 ऑप्शन तक लेके आना है, उसके बाद में इंटेलिजेंट गेस. ठीक है. फ्यू थिंग्स ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के दिन में क्या करना है. तो ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आप रिवीजन करना शुरू कर दोगे. So here I'd like to tell you a very famous quote given by MS Dhoni. उस दिन तक ठीक से नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उस दिन तक अच्छे से पढ़ा है तो वो 1 घंटे रिवीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जाओ. ठीक है. ज़्यादा कुछ ऐसे लास्ट मिनट तक बैठ के तो फ्लिप करते रहना, वो दिमाग को और टेंशन में लेके आ जाता है. प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ माइंड. आप कॉन्फिडेंटली जाओगे, कॉन्फिडेंटली बैठ के सॉल्व करोगे. आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द वर्क इज देयर ऑन दैट 2 hours ओनली. उस 2 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करोगे उसी के ऊपर ही है. परफॉर्मेंस विल बी मैक्सिमम इफ योर माइंड इज काम. ओनली विथ योर काम माइंड यू कैन गिव योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस. हमेशा ध्यान में रखो. तो इसके लिए हमारा धोनी को याद रखो. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. जो होगा होगा. अभी मैं परफॉर्मेंस बेस्ट दूंगा बस. डोंट थिंक अबाउट द पास्ट ऑल्सो. ओके, ठीक से नहीं पढ़ा था और कर लेना चाहिए था. ओके, तो यहाँ पर टेस्ट अटेंड कर लेना चाहिए था, ये कर लेना था, वो करना था. जो करना था कर लिया. अभी जो होगा तो आगे देखते हैं. अभी 2 घंटे हम क्या करेंगे उसी के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड करते हैं. जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड गिव योर बेस्ट. ओके. सेकेंड, at least have a rough idea before going to the center where your center is. अगर आसपास में ये तो एक बार जाके देख के आ जाना, तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है. सो डोंट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस सेंटर, दिल्ली का ही पूरा एरिया पता नहीं है, एक बार जाके देख के आ जाना, कोई भी इशू नहीं है. उस दिन सुबह गड़बड़ नहीं होना चाहिए. एंड प्लान हाउ यू आर गोइंग टू गो. ओके, सो वेदर यू आर गोइंग टू गो बाय मेट्रो और बस और कैब और यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ समवन, वो पहले प्लान करके रखना. ओके, सो सुबह बैठ के फिर कुछ नहीं मिला तो गड़बड़ हो गया, तो वो स्ट्रेस में नहीं होना है. कैरी सम सिंपल फूड. ओके, सो सिंपल फूड होना चाहिए. डाइजेशन का इशू नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके देख लूँगा तो फिर सीसैट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. एंड जीएस पेपर 1 मैक्सिमम देख के उसको भूल जाना है. ऐसा नहीं है कि बाहर आके दोस्त लोगों के साथ में बैठ के चर्चा करोगे. सीसैट के लिए काम माइंड और ज़रूरी है. ओके, जीएस जैसे भी गए हैं सीसैट के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है. सो फॉर दैट टाइम इफ़ यू कैरी सम फूड इट विल बी हेल्पफुल. थोड़ा बहुत वहाँ पर बैठ के आराम से पहले खा लिया तो एक 5-10 मिनट का एक शॉर्ट नैप ले लिया, तो देन यू कैन रिवाइज क्विकली. थोड़ा सा रिवाइज करने से बेटर है कि कुछ क्वेश्चंस लगा दो सीसैट के लिए, आपका आदत में आ जाओगे, वो फ्लो में आ जाओगे. ओके, जाने के पहले. सो अदरवाइज इन मे इट इज़ गोइंग टू बी टू हॉट इन दिल्ली एंड नॉर्थर्न प्लेन्स. Okay, so be prepared for that. So carry some proper water bottles and 1 or 2 packets of ORS. Okay, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ तो मिला के पी लेना. ORS से ये भी फ़ायदा होता है, आपको नींद थोड़ा सा कम हो जाएगा. अगर नींद है, ठीक से नींद नहीं हुआ टेंशन में,
तो नींद का वो इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व करेगा, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ऐसा नहीं कि ORS पैकेट रख के पिछले दिन बैठ के पूरा रात में रिवाइज करते रहो, नहीं, रात में थोड़ा सा अच्छे से सो लेना, ठीक है। ठीक है, so now you can ask your questions, you can please use the mic. Nice. Yes, you can raise your hand, whoever wants to ask a question. सर ज्योग्राफी के लिए 11th-12th NCERT और एटलास इनफ है ना? अगर लास्ट में टाइम ना मिले करंट अफेयर्स को ना देख पाने के लिए तो? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं मुझे, कोई भी चीज़ें इनफ नहीं होते 100%, जो भी किया है मिनिमम इनफ सर कि अभी एटलीस्ट पास हो जाए। अभी के लिए बेस्ड ऑन द नेक्स्ट 3.5 months दिस इज सफिशिएंट। Okay, 11th and 12th stand NCERT if you have done thoroughly, and atlas with some current affairs scope in geography is less only anyway. एटलास मोस्टली कवर कर लेता है करंट अफेयर्स के जितने मैप्स आते हैं। Yes, current affairs से कवर करना है atlas को। Yes. ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि मुझे मैपिंग में इशू होता है, मुझे बहुत कम समझ में आता है, और मतलब मुझे मैपिंग में इशू होता है, तो सर मुझे कोई ऐसा वे बताइए कि जिससे मैं मैपिंग को इजीली समझ पाऊँ। सो सिंपल वे है मैपिंग के लिए, जो आप लोग दीवार के ऊपर लगाए हैं और लगा के भूल गए हो सर उसे रोज देखती हूँ तो जगह तो याद हो गई हैं, बट जो क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं आते सर, थोड़ा घुमा के आते हैं और आई गेट। देखिए, लोकेशन रिलेटेड तो डायरेक्ट ही आता है, यूजुअली लोकेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आएगा। सो इफ यू हैव डन सम कवरेज, बेसिक कवरेज ऑफ मैपिंग, सो यू कैन डू इट। रिविजन इज मस्ट। यस सर। रिविजन करते समय यूज दिस वॉल मैप्स। Sir, While revising, use the wall maps and visualize those place. It will be easy to remember. So one more thing, तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनका सब लोग बोलते हैं कि उन्हें पढ़ लेते हैं, बट मैंने नोटिस किया है कुछ छोटे छोटे मतलब विद इन इंडिया देखेंगे तो विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट के नाम जिन पे हम इतना गौर नहीं करते हैं, आजकल वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर वो बहुत सारे हैं इन नंबर्स, तो उनको रिमेंबर कर पाना। देखिए, तो इंडिया रिलेटेड मैपिंग क्वेश्चन जो भी आता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू स्पेसिफिक। ओके, सो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, लोकेशन। अदरवाइज मिनरल रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेट वाइज ही क्वेश्चन आते हैं। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी स्पेसिफिक लोकेशन, बहुत डिटेल में जाके जरूर याद रखना जरूरी नहीं है। However, if it is related to other subjects, for example, geography से आपको interlink हो रहे आर्ट एंड कल्चर, और geography से आपको interrelated हो रहे तो international relations, तब आपको specific location याद रखना पड़ेगा। सर जैसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए MCQs बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो मैप की प्रैक्टिस करने के लिए भी समथिंग। सिर्फ मैप की प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड से प्रीवियस ईयर्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ पैटर्न। ओके, पैटर्न समझने के लिए, तो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग समझने के लिए तो वही आएगा। तो बाकी तो आप ओपन टेस्ट का क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ओपन टेस्ट और अभ्यास टेस्ट का जो क्वेश्चंस है सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। Sir, with respect to last year's previous question, there was this question with respect to Kaunsi river, it passes through which lake? So Yes. Is it a static question or is it a current affair based question? I would say it is a static question. Okay, I would say it is a static question. कौन सी रिवर कौन सी लेक के थ्रू पास होते हैं, ये सारा हम आराम से कर सकते हो। Okay, so while doing the river system, okay, interlink with the others. Okay, so lakes, wetlands, pilgrimage sites, okay, national parks, biosphere reserve, mountains, plateaus, interlink with the others. This can be, we can easily consider to be a static part, and this is very remunerative. बहुत ईजी, बहुत आसान से कवर हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिलेटेड जो भी है ना, इंडिया में जो भी रिवर है वो वही है। ऐसा नहीं कि हर साल नया नया रिवर आता है, ऐसे तो नहीं है। तो जो भी रिवर्स है उसको थरोली कवर कर लिया तो पक्का सॉल्व हो जाएगा। एंड रिवर रिलेटेड तो एक दो क्वेश्चन है ही। सर पीछे साइड। हाँ, बताइए। सर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर का जो मतलब कि होता है, हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि, तो उसके प्रैक्टिस मतलब कि MCQ मतलब कहाँ से कोई सोर्स हो? न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स। यस सर। देखिए, न्यूज़पेपर आज सच टॉक्स अबाउट करंट अफेयर्स ओनली।
है ना, करंट अफेयर्स के बारे में ही क्वेश्चन होता है। तो इसका सोर्स है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप जब भी फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज लगाते हो तो यूजुअली लाइक एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होगा। तो जब वो पढ़ते हो तो उसको पढ़ो, सॉल्व करो और उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करके रखो एंड रिवाइज करो। बट सर ये होता है मतलब कि हम भूल जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया और करंट अफेयर पढ़ लिया है तो उसके एमसीक्यू मतलब कि सॉल्व नहीं करेंगे तो करंट में तो मतलब समथिंग मतलब 2-3 दिन या कुछ टाइम बाद तो भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए आप जब टेस्ट सीरीज का पेपर उठा के करते हो उसमें करंट अफेयर्स का वो अलग सा नोट करते जाओ या उसी में हाईलाइट करते जाओ, उसको करंट अफेयर्स सोर्स के साथ में जोड़ लेना। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, रिवाइज करना इजी रहेगा। एनीथिंग एल्स? ठीक है, चलो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। So hope to see you all after our prelims analysis. Okay, thank you. Efficient planning and effective follow-through are the twin pillars of a robust exam preparation strategy. In an intensely competitive environment like the UPSC CSE, meticulous planning and a strong initial push are of paramount importance. Avail the chance to gauge the competition nationwide and strengthen your exam preparation with the Vision IAS All India GS Prelims Open Mock Test 3. The test offers key features like All India ranking to gauge your standing among aspirants nationwide, Vision IAS post-test analysis for a comprehensive understanding of your strengths and weaknesses, complete coverage of the UPSC CSE GS Prelims syllabus to ensure you are well prepared, alignment with the UPSC exam pattern to mimic the real test environment. Available online on 25th February 2024. Attempted from anywhere and free of cost within the 2-hour test window. Welcome to the dynamic world of UPSC, where the journey unfolds across 3 critical stages: prelims, mains, and interview. Each stage demands a deep understanding of current affairs, shaping the nature of questions, from factual, analytical to opinion-based questions. As we delve deeper into the UPSC's diverse syllabus, a major hurdle aspirants face is keeping pace with the evolving nature of current affairs. This includes staying updated with changes such as policy shifts, geopolitical developments, environmental updates, and more. Such dynamism, along with an undefined syllabus and a vast array of resources, makes mastering current affairs a formidable task for UPSC aspirants. To navigate these complexities, we have introduced PT 365 to revise, analyze, and master one-year current affairs for Prelims 2024 in 60 hours. With its innovative design and structured approach, PT 365 simplifies your preparation. Our PT 365 offers comprehensive current affairs classes that stand out for their interactive classes by highly experienced Vision IAS faculty, holistic coverage of one-year current affairs for a strong foundation which includes prelims relevant topics from the Hindu, Indian Express, PIB, Economic Times, Yojana, Economic Survey, Budget, Sansad TV etc. from April 2023 to April 2024. Embrace the vast UPSC syllabus with PT 365's targeted and thorough approach, transforming it from a complex task into a pathway for achievement. Ready to begin? Register now at our website. For any further queries, reach out to us at these numbers or enquiry@visionias.in. We are here to assist you on your journey to success. Welcome everyone. Meet Arav, an aspiring UPSC candidate. His eyes are full of dreams, his room a reflection of his ambition with UPSC topper stories. Arav starts his journey and soon finding himself engulfed by mountains of books and endless notes as he grapples with the vast UPSC syllabus. Despite trying various revision methods, Arav's anxiety escalates each day. He feels lost in a sea of information, struggling for direction.
In his moment of confusion, Arav discovers the Lakshya Prelims Mentoring Program 2024, a ray of hope in his challenging journey. He found that Lakshya program offers a strategic plan for revision and practice, which includes the entire GS and CSAT syllabus. It skillfully integrates monthly current affairs and PT 365 with the static GS syllabus for a comprehensive revision. CSAT, once a daunting task, is now approached with rigorous practice and focus, building confidence. Amazed by the personalized approach, Arav finds Lakshya's plan as per his unique needs, that is, by focusing on high-yielding areas, facilitating multiple revisions, providing effective and validated reading list for efficient preparation, and analyzing the evolving demand for UPSC prelims paper with in-depth trend analysis of previous year questions, PYQs. With Lakshya's structured plan, Arav's approach to preparation evolves. The chaos of his study room now becomes a focused learning environment. Empowered and confident, Arav is now ready to conquer the UPSC prelims. The once daunting task now appears within his reach. Interested in learning more or registering? Visit visionisas.in/Lakshya or call us on these numbers. Start your successful journey with Vision IAS today.